Hello students, welcome to CAT preparation by textbook. So today we are going to do the analysis of AIMT that happened on 25th of May, right? Every Sunday we conduct a scholarship test which goes by the name All India Mock Test. तो 25th में को जो हमने टेस्ट लिया था उसका क्वांट का जो सेक्शन है we'll be discussing today here. Okay, just a sec. Chalo. Now, before we start, guys, do not forget to like the video. Do not forget to like the stream. And yes, 31st of May, we are conducting this AICST 2025, in which you can score real nice marks and get up to 90% of the scholarship. Okay, let's start with the first question of QA that occurred in 25th May AIMT. Come on, guys. सबसे पहले I'll give you some time to solve this question. बहुत ज़्यादा नहीं. I'll give you like where is the clock? Here's the clock. I'll give you 90 seconds. Not 90 seconds. I'll give you a minute. It is expected कि आपने attempt करा है ये already. So I'll give you 60 seconds just to read the question in case you have not attempted the question, and then we'll discuss this. Come on, guys. Do this. Last 30 seconds left. Time's almost up. चलो देखो क्या था इस क्वेश्चन में. A student rolled an unbiased dice. A student rolled an unbiased dice that has numbers from 1 to 6 twice. So student ने क्या किया, एक डाइस को रोल किया 2 times. Find the probability of getting a number such that on subtracting the digit obtained from the second dice from the first die is divisible by 3. So what is the question here? कि the student is rolling a dice 2 times. तो पहली बार कोई एक नंबर आया होगा, लेट्स से x. दूसरी बार कोई एक नंबर आया होगा, लेट्स से y. x lies from 1 to 6. x is anything from 1 to 6. Yes or no? Yes, sir. x is anything from 1 to 6. y is anything from 1 to 6. अब इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, that is divisible by 3. Okay. Although it is mentioned, you are subtracting second from the first. But all we are interested in is the difference. Why? Because देखो अगर यहाँ पे 4 आया और यहाँ पे 1 आया, तो the difference is 3 and this is divisible by 3. अगर vice versa भी हो गया ना, so difference is -3 and -3 is also divisible by 3. So we have to consider both of these cases and other cases, right? So कितने cases बन सकते हैं? Let's focus on that. कितने cases बन सकते हैं? Let's start from the very beginning now. शुरू से देखते हैं. Okay. चलो. Now the pairs could be, you check this out. Pairs could be 1-1. It could be 2-2. It could be 3-3. It could be 4-4. Could be 5-5. And could be 6-6. The difference is 0, which is obviously divisible by 3. And then it could be 4-1 or 1-4, right? Both of these cases will be counted. It could be 5-2 or 2-5. It could be 6-3 or 3-6. So in all there are 12 cases.
In all there are 12 cases out of a maximum of total कितने cases बन रहे बेटा 6 into 6 36 out of a maximum of 36 cases. So correct answer is 1 by 3. Option 2. This was the correct answer to the question. Bolo yes sir. Moving to the next question. This one. So we'll solve this directly. इसके लिए I am not giving you any time. 3/4 of 2/9 of 1/5 of a number is 249.6. Let the number be n. So the question is pretty straightforward. The question is pretty straightforward. 3/4 times of 2/9 times of 1/5 times of a number n is 249.6. Let's calculate n. n calculate karo. So this goes in 3 times, this goes in 2 times. So this is 1/30 into n is 249.6, where n is 249.6 into 30. Okay, and this is how much? 249.6 into 3 is 748.8 or 7488. So the number itself is 7488. The number itself is 7488. What is asked? They are expecting what is 50% of that number. इस number का half कर दो. So answer is 7488 divided by 2, and this is nothing but ये कुछ भी नहीं है 3744 है. Was an easy question, obviously. Was on the easier side. Let's move to next question. I'll give you a minute to ponder and then we'll start discussing. Chalo. Try this one. Come on, guys. Very good. Chalo. Now, this question के लिए you need to be aware of an algebraic equation, algebraic expression. If I assume 1 minus m to be a, m minus n to be b, and n minus 1 to be c, what is a plus b plus c? What would be a plus b plus c, beta? It would be 1 minus m plus m minus n plus n minus 1. Okay. If you closely observe, you have minus m plus m cancelled out. Minus n plus n cancelled out. Plus 1 minus 1 cancelled out. So this is equal to 0. This is equal to 0. So all I have is a plus b plus c is equal to 0. And when a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is nothing but 3 times a, b, c. Hayana. We are aware of this algebraic expression. When a plus b plus c is equal to 0, in that case a cube plus b cube plus c cube equals 3 times a, b, c. Okay. This is nothing but a cube, b cube, c cube. देखो ना, a cube, b cube, c cube. So this can be written as, numerator को लिख सकते हैं 3 times a, b, c, where a is 1 minus m, b is m minus n, c is n minus 1 upon
डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, 12 इंटू 1 माइनस एम इज देयर ऑलरेडी, m माइनस एन है और n माइनस 1 है। स्टार्ट करो आपका कैंसिलेशन का गेम, n माइनस 1 n माइनस 1 कैंसिल्ड आउट, m माइनस n कैंसिल्ड आउट, 1 माइनस m कैंसिल्ड आउट, 3/12 और 1/4 is the right answer. Correct answer to this question was option 4, 1/4. बोलो हाँ जी, बोलो yes sir. Very good. Let's jump to next question. चलो, I'll give you a minute. देखो क्या कर सकते थे इस क्वेश्चन में, think a little about it, what you could have done. You have x plus 1 by x is equal to minus 1. You needed to find the value of x raised to the power 15 plus 1 by x raised to the power 15. क्या कर सकते थे, try to find out. अच्छा, tomorrow would be our regular geometry class, right? कल जो है हमारा रेगुलर ज्योमेट्री क्लास होगा, ट्रायंगल्स का थर्ड पार्ट वी वुड बी हायरिंग। Last 20 seconds are left. चलो, टाइम्स अप। चेक दिस आउट आराम से। What I have x plus 1 by x equals minus 1. Okay. So this can be written as x square plus 1 is equal to minus x. LCM लिया, then cross multiply किया. This is nothing but x square plus x plus 1 equals 0. बोलो हाँ जी, yes sir. And now if we multiply both left hand side and right hand side by x minus 1, जैसे I have this right now, x square plus x plus 1 equals 0. अगर मैं राइट हैंड साइड भी x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूं और लेफ्ट हैंड साइड भी x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। We are good with this. Right hand side anyways would be 0 only. Right hand side anyways would be 0. Left hand side में we will have x cube plus x square plus x minus x square minus x minus 1 equals 0. आपका कैंसिलेशन का गेम शुरू करो। I can see I have plus x square, I have minus x square, I have plus x, I have minus x. All I am left with is x cube minus 1 equals 0. सर ये क्या मिल गया आपको? ये मिल गया x cube equals 1. इसका क्या सिग्निफिकेंस है? Now this can be written as x cube to the power 5 plus 1 upon x cube to the power 5 लिख सकते हैं ना, right? And I have the value of x cube. I have the value of x cube as 1. मेरे पास x cube की वैल्यू है and that is 1. So 1 raised to the power 5 plus 1 upon 1 raised to the power 5. This is equal to 2. Correct answer to this question was 2. Option 2. Got it? Am I clear with this? Yes, sir, you are. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था एग्जाम में, वेरी बेसिक वन। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है। यूनिट डिजिट, मैंने यूनिट डिजिट का एक शॉर्टकट भी डाला है, आप देखोगे। चेक आउट द शॉर्ट्स ओवर द सेक्शन ओवर द चैनल। कीप ऑन चेकिंग ऑन द शॉर्ट्स, ठीक है, बिकॉज शॉर्ट्स में वी डू डिस्कस शॉर्टकट्स एज वेल विद इन अ मिनट।
और सम स्पेसिफिक शॉर्ट ट्रिक्स जो आपको पता होने चाहिए, वी डू डिस्कस दैट। चलो इस वाले क्वेश्चन में 3 रेज टू द पावर 999, इसको अलग से डील करते हैं, एंड 7 रेज टू द पावर 1000। अच्छा, इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? सो आपको क्या बताया, सिंस दिस इज अ यूनिट सिंगल डिजिट नंबर, आप उसको एज इट इज ले लो, 3 ले लो। हालांकि आपको यूनिट डिजिट पे जो डिजिट है वो लेना होता है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो लेना होता है। हियर दिस इज अ सिंगल डिजिट नंबर, सो 3 ले लिया एज इट इज। यू नीड टू डिवाइड द पावर बाय 4, जो पावर है डिवाइड द पावर बाय 4, ओके। एंड इफ द रिमाइंडर इज 1, take 1, if the remainder is 2, take 2, if the remainder is 3, take 3, if the remainder is 0, take 4, right, as the power। तो 999 को आप 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर इज 3, तो इफ द रिमाइंडर इज 3 आपको 3 लेना है, ओके, एंड देन एक्सपैंड इट 27, सो यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा 7। 3 raised to the power 999 would be a huge number that ends with 7, okay। Now let's deal with 7 raised to the power 1000। इसका एक्सपेंशन कैसे होगा बेटा, 7 would be here and 1000 को डिवाइड करो 4 से, इट इज एग्जैक्टली डिवाइडेड, रिमाइंडर 0 आता है, तो अगर रिमाइंडर 0 है तो वी आर टेकिंग 4, रिमाइंडर 0 है तो वी आर टेकिंग 4। नाउ 7 raised to the power 4 is how much? Sir, 7 raised to the 4 is how much? Sir, 749, 343 into 7, ये कितना होगा सर? 2100 plus 280 is 2380, okay, and then 21 add करो, 2401, this is 2401, this is 2401, तो यूनिट डिजिट पे क्या आ गया 1। So when you expand 7 raised to the power 1000, it would be a very huge number that ends with 1. And now when these two numbers are multiplied, यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 into 1 7, so यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 7। I have discussed the shortcut of this in the form of short, also in the number system scratch batch में आप देखोगे मैंने ये डिस्कस करा है ऑलरेडी, so go and watch that as well if you want the complete theory of this। Sorted? चलो next question, very good। This one, और ये सारे क्वेश्चंस स्कॉलरशिप टेस्ट में थे, सो इफ यू हैव अटेम्प्टेड द टेस्ट तो आपने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व किए होंगे, एटलीस्ट अटेम्प्ट तो किया होगा। I'll give you 60 seconds, I'll give you 60 seconds and then we'll start discussing this। I'll give you 60 seconds and then we will start discussing this। आ जाओ, come on guys। Last 20 seconds for this question। In a manufacturing facility, there are 3 types of machines, M1, M2, M3, which contribute 20%, 15% and 32% of the total output, okay, very good। अच्छा देखो, there are 3 different machines, M1 है, M2 है, M3 है, okay। let's say that the total production is 100 units, let's say total production is 100 units, तो M1 का प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन क्या है बेटा 20%, so M1 का कंट्रीब्यूशन वुड बी 20, M2 का कंट्रीब्यूशन वुड बी 15 एंड M3 का कंट्रीब्यूशन वुड बी 32, राइट। अब इसमें ना डिफेक्टिव है,
M1, M2, M3, they produce 3%, 7% and 2% defective products respectively. Defective products. Okay, how much is the defective product? 3%. 3% of what? 3% of 20. This is nothing but 0.6. Okay, M2 का defective percentage क्या है? 7%. 7% of what? 7% of its production. 7% of 15 is nothing but, ये कितना हो जाता है? 1.05, right? And M3 का defective percentage is 2%. 2% of what? 32, so this is 0.64. Total defective कितना है? Total defective is how much? Add them. So this is 1.69 plus 6 plus 0.6. So this is 2.29. 2.29 is the total defective. Okay, and their total production is how much? 32 plus 15 is 47. 67 is the total production. Okay, 67 is the total production, out of which 2.29 is defective. How much is non-defective? They are expecting non-defective products. How much is non-defective? 67 minus 2.29? Yes or no? Non-defective is 67 minus 2.29, and this is how much? 64.71. 64.71. तो रेंज क्या बोलेंगे हम? रेंज पूछा है. अब देखो इसमें तो एक बहुत स्पेसिफिक सा नंबर आ रहा है 64.71%. ओके, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू 100, तो कहीं ना कहीं ये परसेंट में होगा. सो रेंज 64 to 65. अगर इंटीग्रल वैल्यूज लेने हैं तो 64 to 65. इफ आई वर द स्टूडेंट, अगर एक ही लेना था तो आई वुड हैव टेकन 64. I would have taken 64. Okay, greatest integer I would have taken 64.71 है, I would have taken 64. अगर उन्होंने बोला होता कि एक ही कोई कंसिडर करना है, I would have taken 64. रेंज पूछा है, so I would be taking 64 और 65. अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो 64, लीस्ट इंटीजर लिया तो 65. सॉर्टेड. सो ये एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में. लेट्स जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन पे जंप कर जाते हैं. ओके, so there is a specific task. ठीक है, there is a specific task which always begins at 8 a.m. on Monday and can only be carried out between 8 a.m. to 12 p.m. and from 1 p.m. to 5 p.m. So मंडे को जो टाइम स्लॉट है आपके पास, मंडे को जो टाइम स्लॉट है टास्क को करने का, दैट इज 8 a.m. to 12 p.m. and 1 p.m. to 5 p.m. तो मंडे को यू आर वर्किंग फॉर 8 hours. अगर आप पूरे दिन काम करते हो तो यू विल बी वर्किंग फॉर 8 hours. Okay, very good. And this is not applicable for 1 day. This is applicable for any given day. Okay, when you read the question, you will understand. This is applicable for any given day. तो अगर ट्यूसडे को भी अगर आपको काम करना है, तो these are the slots in which you can work. काम पहले फिनिश हो गया तो well and good. If not, तो these are the slots where you are allowed to work. Okay. अब देखो क्या गिवन है. अच्छा, from here, when completed by A alone, the work finishes at 5 p.m. on the following day. So A started working on Monday. A ने मंडे से काम करना शुरू किया और उसका काम ट्यूसडे को 5 बजे फिनिश हुआ. सो ए ने मंडे को 8 घंटे काम किया होगा, ट्यूसडे को 8 घंटे काम किया होगा, राइट? दोनों भी शिफ्ट में.
So A has worked for a total of 16 hours. Hi Anna. A has worked a total of 16 hours. Very good. Or A can finish the work in 16 hours. We can say this. While B alone works, if B alone works on the task, it is completed during the morning session on Tuesday. अब अगर B करता है उस काम को, क्वेश्चन सेज दैट A will take 16 hours, बट अगर B करता है, so B will complete the task on Tuesday morning session. मतलब Monday is working for the entire day. B is working on Monday for entire day for entire 8 hours. Plus Tuesday को, the work that is doing on Tuesday. And Tuesday को he finishes the work in the morning shift only. Tuesday को he finishes the work in morning shift only. अब morning shift में given नहीं है कि उसने काम 8 बजे फिनिश कर दिया या 12 बजे फिनिश किया. This is not given. So technically B के लिए हमारे पास एक रेंज है. Okay. Now अगर B ने सुबह 8 बजे काम खत्म कर दिया, so he completed the entire work on in 8 hours only. और अगर B ने 12 बजे ट्यूसडे को काम खत्म किया, so there would be another case where B could be working for 12 hours. हाँ या ना? B या तो उस काम को 8 घंटे में फिनिश कर सकता है या तो फिर 12 घंटे में फिनिश कर सकता है, या उसके बीच में कोई भी टाइम चलेगा. मिनिमम 8 घंटे में, मैक्सिमम 12 घंटे में. अब अगर वो साथ में काम कर रहे हैं, इफ A and B are working together, तो फिर काम मिनिमम कितनी देर में फिनिश हो सकता है ये निकालना है. ओके. और मैक्सिमम कितनी देर में फिनिश हो सकता है. चलो गाइस, अगर A और B साथ में काम कर रहे हैं तो मिनिमम टाइम कितना लगेगा काम को फिनिश होने में, और अगर A और B साथ में काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम क्या लगेगा फिनिश होने में, ये निकालना है. अगर मिनिमम टाइम निकालना है तो आई हैव टू कंसिडर 16 hours for A and 8 hours for B. 16 hours for A and 8 hours for B. बोलो यस सर. हाँ या ना? चलो, if it is 16 hours for A and 8 hours for B, अगर A किसी काम को 16 hours में करता है, B उसी काम को 8 hours में करता है, तो काम कितने देर में फिनिश हो जाएगा. Let's say the work is 16 only. 16 1 plus 2, so the work will be finished in 5 1/3 hours. हाँ या ना? Which is 5 hours and 20 minutes. ओके. 5 घंटे 20 मिनट में वो काम फिनिश हो जाएगा. मंडे को सुबह शुरू किया, 8 से 12 4 घंटे, 1 बजे वापस काम शुरू किया, 1 से 2 5 घंटे, and another 20 minutes. So work will be finished. The minimum possible time when the work will be finished is 2 p.m. and 20 minutes on Monday. ये मिनिमम टाइम है काम के फिनिश होने का if A and B are working together. If A and B are working together. अगर डायरेक्ट I'll answer this question बेटा. ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ बस. Let me explain this question. अब A और B को मैक्सिमम क्या टाइम लगेगा. अगर A और B का मैक्सिमम टाइम निकालना है तो आपको A का 16 आवर्स लेना पड़ेगा और B का 12 आवर्स लेना पड़ेगा. बोलो यस सर. यस सर. In that case, the time taken would be, total work is 48, LCM of 16 and 12, right? 3 plus 4, so this is 48 plus 7, this is 6/7 hours. So ये काम लगभग 7 घंटे में फिनिश होगा, 7 घंटे से थोड़ा कम. So starting at 8 AM, आपको देखना है 6 hours 50 minutes लेते हैं रफली. तो 8 AM से स्टार्ट किया, 8 AM to 12 AM 4 hours हो गया, राइट. एंड देन 1 PM को वापस स्टार्ट किया, 1 PM to 3 PM 6 hours हो गया, 3 PM and 50 minutes के आसपास. दिस इज टेंटेटिव. आई हैव नॉट कैलकुलेटेड द एग्जैक्ट टाइमिंग, बट दिस इज टेंटेटिव. सो A and B मिलके काम को इसके बीच में फिनिश करेंगे, 220 से लेके 350 के बीच में. एंड दिस इज ऑल्सो ऑन मंडे ओनली. और ये चीजें आपको तब समझ में आ रही होंगी इफ यू हैव वर्कड हार्ड, इफ यू हैव फॉलोड द स्क्रैच बैच.
और फॉर दैट मैटर एनी बैच एनीवेयर, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है, दिस इज वेरी बेसिक। स्क्रैच बैच में ऑल्सो आई हैव कवर्ड, और टाइम एंड वर्क, राइट। अगर आपने वो भी अटेम्प्ट नहीं किया है, कहीं और क्लासेस में भी नहीं किया है, सेल्फ स्टडी भी नहीं किया है, तो डिफिकल्ट जा रहा होगा एंड यू आर इन डीप ट्रबल। स्टार्ट वर्किंग। चलो, अब ए एंड बी उस काम को 2:20 से लेके 3:50 तक कभी भी खत्म कर सकते हैं। ऑफ द गिवन ऑप्शंस देयर इज ओनली वन ऑप्शन, ऑप्शन 4, जो उस टाइम स्लॉट के बीच में आता है। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज ऑप्शन 4, और कुछ नहीं। सॉर्टेड? करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज ऑप्शन 4. वेरी गुड. लेट्स क्विकली जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आ जाओ, चलो, we'll discuss this straight away. There is a train traveling 144 km per hour. अच्छा, what is 144 km per hour? Sir, 144 into 5/18, 40 meter per second है सर ये. So this is nothing but 40 meter per second. So there is a train traveling at a speed of 40 meter per second. Okay. Completely crosses another train having half its length. So अगर इसका लेंथ 2x लिया, so there is another train जिसका लेंथ x traveling in opposite direction. So this train is traveling in this direction with the speed of 36 km per hour. So 36 km per hour is nothing but 10 meter per second, right? And it passes, they cross each other in 6 seconds. ये एक दूसरे को कितने देर में क्रॉस कर रहे हैं? 6 सेकेंड्स में गाइस. और रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगेगा. रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगेगा. चलो अभी देखो, रिलेटिव स्पीड का क्या होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, dr इज इक्वल टू sr इनटू t, राइट? व्हाट इज dr? dr is 2x plus x, the entire distance from the first point to the last point. Okay, so 2x plus x is the dr. What is speed relative? Since they are moving in opposite direction, it would be added 40 plus 10. Time given has 6 seconds, put it 6 over here. So 3x is nothing but 50 into 6. X is nothing but 100 meters. So length of the train is 100 meters. Length of the train is 100 meters. Very good. आपको length of the train मिल गया. आपको length of the train मिल गया. And अब क्या बोला बेटा? The same train passes a railway platform in 45 seconds. कौन सी ट्रेन? This train. This train. Now this train whose length is 200 meters. अच्छा, x is 100 ना, तो so this length is 200, not 100 but 200. This length is 200. The train length is 200 meters running at the speed of 40 meter per second. एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, टाइम इज 45 सेकेंड्स. आपको लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म निकालना है. अगेन रिलेटिव स्पीड, dr इज इक्वल टू sr इंटू टी. dr इज इक्वल टू sr इंटू टी. व्हाट इज dr? व्हाट इज dr? लेंथ ऑफ द ट्रेन एज वेल एज प्लेटफॉर्म. 200 plus p is equal to sr. What is sr? sr is 40. What is time? Time is 45. Length of the platform would be 1800 minus 200. 1600 would be the answer to this question. Option 4. Sorted? Chalo, no Smriti. B is not the right answer. 1900 is not the answer. 1600 is the answer. I'll give you 60 seconds for this. Try karo and then we will discuss. I'll give you 60 seconds for this.
Come on, guys. I have a question. When I am from non-engineering background से है तो guys देखो, you guys know the solution. I don't understand why do you ask the question जिसका आंसर आपको नहीं पता है. अच्छा, Derek and Smriti, tell me, if you are from non-engineering background, what could be done? एक बार सोचो. I'll answer your question, but एक बार आप खुद से सोचो, what could be done if you are from non-engineering background? एक बार सोच के बताओ मुझे. Okay, मतलब you are weak in mathematics, right? तो क्या करना चाहिए? This is what you are trying to say. You come from a non-engineering background. I find averages, ratios, proportion difficult. Is there any way? What we are thinking of? Yes, there is a way. What could be that way? Meanwhile, there is a tea merchant who blends two varieties of tea in the ratio 5:4. Let's say variety 1 and variety 2. The cost of variety 1 is 200 rupees per kg, cost of variety 2 is 300 rupees per kg. इनको मिक्स करके द कॉस्ट इज x रुपीज पर केजी. ओके, एलिगेशन का मेथड. हियर इट वुड बी 300 माइनस x, इट वुड बी x माइनस 200. इनका रेशियो क्या है? 5:4. सो 300 माइनस x अपॉन x माइनस 200 is 5/4. Try to find out the value of x. So 1200 minus 4x is equal to 5x minus 1000. 9x is equal to 2200 and x is equal to 2200 by 9. So the cost price of the mixture is 2200 by 9. Cost price of the mixture is 2200 upon 9. Okay. Now she sells the blended tea at 250 per kg. आपके पास cost price है. You have the cost price as 2200 upon 9. You have the selling price as 250. How much is the profit percent? Profit percent क्या है? Sir, selling price is more than cost price, obviously. ये 260 नहीं है, this is 250. This is 250. Selling price is more than cost price. So it is a case of profit. How do we calculate profit percent? Profit percent कैसे calculate करते हैं? So that is selling price minus cost price upon cost price into 100. Okay, 250 minus 2200 upon 9 upon 2200 upon 9 into 100. This would be the answer. Okay, चलो करो इसको. So this is 9 into 50 upon 9, 50 upon 9 into 9 upon 2200 into 100. डबल जीरो से डबल जीरो गया and what time 9 से 9 गया. 50 upon 22 which is also 25 upon 11 which is also 2.27% profit. 2.27% profit. Option 2 is the right answer. Option 2 is the right answer. Chalo, try this last question. This was the last question. I'll give you 60 seconds for this.
कम ऑन गाइस, क्या हो गया स्मृति? देखो, इफ यू आर फ्रॉम नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, टारगेट ओनली अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, और अगर टाइम मिल गया तो अलजेब्रा. ओके, अर्थमेटिक यू कैन सी 8 to 9 क्वेश्चंस, ज्योमेट्री यू कैन सी 4 to 5 क्वेश्चंस, अलजेब्रा यू कैन सी 7 to 8 क्वेश्चंस. आई एम सेइंग ज्योमेट्री करना है क्योंकि ज्योमेट्री इज वन सच टॉपिक जहां पे वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है. If you work, the input is to output. Geometry में better है when compared to algebra. So that's why I'm saying arithmetic and geometry पे focus करो and start with the very basic books. आर.एस. अग्रवाल से शुरू करो. Try to solve all the questions. Doubt आया, reach out to the mentor. That mentor could be anybody from your family, your friend, your senior, आपके कॉलेज का दोस्त, आपके कॉलेज में सीनियर कोई, आपने जहां एडमिशन ले रखा है वहां के फैकल्टीज, एनीबडी कुड बी द मेंटर. आर.एस. अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, हो गया ना अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री. अगर आपने आर.एस. अग्रवाल सॉल्व कर लिया ना तो यू वुड बी एबल टू सॉल्व 50 to 60% ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री वेरी इजीली. सो आप कहीं ना कहीं 8-9 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे. 8-9 क्वेश्चन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री से केवल. अलजेब्रा भी कर लिया तो 11-12 क्वेश्चन हो गए आराम से. इन 11-12 क्वेश्चन इज मोर देन 90 परसेंटाइल, 93, 94, 95 परसेंटाइल के आसपास है ये. 11-12 क्वेश्चन इन क्वांट इज क्लोज टू 95 परसेंटाइल. बट हाँ, जो कर रहे हो ना आप लोग, उससे नहीं होगा. जस्ट रोमिंग हियर एंड देयर, क्योंकि आई हैव नेवर सीन यू, आई हैव सीन यू इन माय क्लासेस डायरेक्ट, बट आप आते हो बस रैंडम क्वेश्चन पूछते हो और चले जाते हो. ठीक है, यू आर नॉट फॉलोइंग द क्लासेस. तो ऐसे नहीं होगा बेटा. यू नीड टू फॉलो. आई एम नॉट सेइंग मेरा ही फॉलो करो, बट आपको किसी ना किसी का फॉलो तो करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है. यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग. इट विल टेक टाइम. इट विल टेक 3 to 4 months to improve your mathematics. Start working. चलो, now this question, एग्जाम में आई वुड रिकमेंड कि ऐसे क्वेश्चन के लिए टेक द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. कैलकुलेटर इज गिवन इन एक्चुअल एग्जामिनेशन. ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर, वर्चुअल कैलकुलेटर इज देयर. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आई वुड रिकमेंड यू टू यूज दैट कैलकुलेटर. इवन इस अभी भी वी विल बी यूजिंग द कैलकुलेटर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. So the question is, a man borrowed 15,400. He borrowed 15,400. इस पे 15% इंटरेस्ट लगा. ओके, तो 15,400 आफ्टर 15% ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बेटा? यूज द कैलकुलेटर. 15,400 मल्टीप्लाइड बाई 1.15. द अमाउंट वुड बी 17710. And then he paid a sum of 2,500. उसने 2,500 पे कर दिया. So how much is the left? Minus 2,500. So the amount left is 15,210. और ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा. अगेन 15% on this. Again 15% on this. 15,210 multiplied by 1.15 is 17491.5. He is paying 2,500. इसमें से माइनस कर दो 2,500. The amount left is 14991.5. This would be the principal for third year. Again 15% multiplied by 1.15, 17,240. 0.225 minus 2500. ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ऑप्शन 1 0.225 एक ही ऑप्शन में है. 0.225 एक ही ऑप्शन में है. हेंस ऑप्शन 1 सॉर्टेड. आई एम गुड इन VARC, decent in LRDI. I am just bad at maths.
देखो, इफ यू आर बैड एट मैथ्स ना, देयर आर वेरी ब्राइट चांसेस कि एलआरडीआई के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे. ओके, बिकॉज द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स यू हैव, एलआरडीआई के बहुत सारे क्वेश्चन आप विजुअलाइज कर सकते हो. So the more better you are with maths, the more better you are with LRDI. Keep this in mind. Start working. Start working. Stop worrying. Stop overthinking. Stop overthinking. Okay. चलो guys, we have a solution for you. अभी ऑफर चल रहा है मिशन सिलेक्शन. ओके, इसमें आपको जो प्लस कोर्स है वो 9,999 में मिल जाता है. जो प्रो कोर्स है, प्रो कोर्स क्या है? प्रो कोर्स इज सब्सक्रिप्शन टू ऑल द बैचेस फॉर ऑल द मेजर मैनेजमेंट एग्जामिनेशंस फॉर कमिंग 1 ईयर. कैट के लिए हो, स्नैप के लिए हो, एनमैट के लिए हो, सीमैट के लिए हो, सबके बैचेस. इंटायर एक्सेस, ऑल ऑफ द रिसोर्सेस दैट इज अवेलेबल ऑन प्लेटफॉर्म, सब मिल जाता है आपको 14,999 में. एंड 2 साल का MBA Pro you can access in 24,999. So you have the offer. If you have not started preparing, not enrolled anywhere, join us and let's start preparing in a structured way. Okay. Chalo guys. So we are done from today's session. We'll meet again tomorrow with the geometry triangles part 3rd. Do attend. Till then, have a great day ahead. See you again tomorrow. हेलो. मैं D7 में बैठा हूँ.